right-wing women, these RSS women who will never speak about emancipation, who will never speak about women's autonomy and independence, who will only support Manuvadi cultures, but they become instruments of hatred in the hands of the RSS. How do you fight that? That is a very critical question. And the last point I want to make. Today, because of our movements, women's independence in political decisions has grown enormously. पहले कभी नहीं था कि औरतें अलग वोट देने के अधिकार के रूप में अपने आधार पर करते हैं, कभी नहीं था। लेकिन आज औरतें हमारे आंदोलनों के कारण अलग वोट देते हैं। पुरुष कुछ कहता, औरत कुछ करेगी। We are proud that in Kerala, every analysis shows that the women of Kerala vote more than men for the LDF. It's a fact. So women have an independent vote. So what are the bourgeois parties doing? We know women's unpaid work. हमें पता है, women's unpaid work, if you have an assessment, if you monetize it, it is 22.6 lakh crore rupees in a year. 22.6 lakh crore rupees, according to an SBI survey. Unpaid monetization of women's domestic work. That is not counting women's work in family enterprises, unpaid work in farms. So women work. In fact, the saying, there's a saying, women hold up half the sky. Actually, women hold up much more than half the sky. Much more. Everywhere it's shown that women work much more than men. But let's forget that for now. I mean, don't forget it. But I'm moving on to my second point, which is that the direct cash benefit to women from 1,500 rupees to 2,500 rupees. How do we look at it? Modi had said, ye revari hai. But 15 of Modi's state governments have to promise to give that money because women are being denied their rightful share in national resources. My dear sisters, we look at it as a right. We look at it as rights holders. We are not beneficiaries. ये टीएमसी सरकार बोलती है ना बंगाल में कि हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा 1,000 रुपया हम खत्म करेंगे। क्या बकवास है? किसी चीफ मिनिस्टर का बाप का पैसा नहीं है, ये पब्लिक मनी है। It is our right. And therefore, in many states where they have made such promises, they are not implementing that promise. So we have to engage with that. We have to fight for that. We cannot step back and say, "Arey, this is Sarkari, what to do? Women are voting for that money." No. It is our right. And as part of our right, we have to engage with all these schemes to prevent the ruling classes, and particularly this Modi pro-corporate, pro-Adani Ambani government. We have to fight against them to demand the rightful share of women. Very soon, state assembly elections are going to be held, and we know how important those state assembly elections are going to be. We have fought, and because of our fight, governments across India can no longer ignore women's rights, our fights against violence, our fights for security, our fights for economic rights and equality. These are basic issues. And today, when this communal
I would say this communal monster threatens each and every one of us. In these state elections, I am sure, as is our tradition, in all the states which are going to elections, AIDWA will certainly stand up and fight for a vision of the left, a vision for the left and democratic forces to grow strong across the states where the elections are being held. I thank you very much for giving me this opportunity to speak to you. मैं यही कहना चाहती हूँ कि 14 सम्मेलन AIDWA के हुए हैं और हर सम्मेलन में एक नई चुनौती के रूप में आपने बहस की. You have always understood the new challenge. In all these years of the AIDWA growing from strength to strength, and I'm sure this 14th National Conference will also give us a stronger vision to defeat the forces, dark forces, who want to engulf India in hatred, and we will fight for our alternative vision for women's emancipation. Thank you very much. AIDWA Zindabad, Nari Mukti Zindabad. AIDWA Zindabad. सांप्रदायिकता का नाश हो, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, मनरेगा पर हमले नहीं सहेंगे, अरे मनुवाद हो बर्बाद, AIDWA जिंदाबाद. My dear sisters, now there is a special session. Before going, I have to thank on behalf of AIDWA, our dear leader, Comrade Brinda's speech was a very motivated speech. We are giving our assurance, we will take the challenge during coming 3 years. We are giving on behalf of AIDWA, I am giving the assurance to her. We will take that challenge. Now, a special session that is symbols of resistance. 4 sisters had come here, they are here from Tamil Nadu, 1 sister from Pondicherry, 1 sister from Bihar, 1 sister from Rajasthan, and another girl, I told you, she is also here, not like a resistance. But this special session, I request Comrade Tabasi and Comrade Prachi to handle this, symbols of resistance, up to, we will take 1 hour. I invite both leaders, Comrade Tabasi and Comrade Prachi. Good morning, everybody. This our special session of Symbol of Resistance starts now. I'll first request Rani, who is already here, to come up to tell her story. Rani comes from Dharmapuri district of Tamil Nadu. She's married to a physically challenged labor, and then how bravely she fought for her sexually harassed daughter, and still she is fighting with AIDWA support now. Let us hear out from her own. Rani, and then I'll request Comrade Pramila to translate it for her. Rani, please come. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிற என்னோட பொண்ணு 13 வயது, பாலியல் தொல்லை காரணமாக வந்திருக்கிறேன். அவளுக்கு பேட் டச் காரணமாக ஸ்கூல் அவேர்னஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த அவேர்னஸில் ஸ்கூலில் மிஸ்கிட்ட சொல்லியிருந்தா, அது மூலிமா தான் எங்களுக்கே தெரியும்.
இதில் என்னென்னா என்னோடய ரிலேஷனேன்றதுனால வந்து கேஸ் கொடுக்கறது செய்கிறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் தயக்கத்தில் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து மூவ் பண்ணல செய்யலை, கேஸ் எதுவும் மூவ் பண்ணல செய்யலை. மாதர் சங்கம் இணைஞ்சி அவங்க மூலிமா வந்து நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, செஞ்சுருந்தாங்க. மாதர் சங்கம் என்னன்றதே வந்து எனக்கு தெரியாமல் இருந்துருது. இதன் மூலிமா பாப்பாவோட அவேர்னஸ் இது பேட்டேஜ் மூலிமா தான் வந்து இது இருக்குன்றதே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, செய்கிறாங்க. ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எனக்கு வந்து இதை சொல்கிறதா வேணாவா அப்படின்ற ஒரு பாப்பா இப்படி போய் சொல்லிட்டாலே ஸ்கூலில் அப்படின்ற ஒரு மன உளைச்சல் இருந்தோம், செஞ்சோம். ஏன்னா வந்து ரிலேஷனு என்ன நினைப்பாங்க, செய்வாங்க. இது என்னதான் வந்து நம்ம மேலே எந்த ஒரு இதுவும் இல்லைனாலும் ஒரு குறை சொல்கிறது தான் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்குது செய்யுது. அப்படிங்கும்போது வந்து மாதர் சங்கத்து மூலியமாக வந்து நிறைய பெண்கள் போராடுறத பார்க்கும்போது எனக்குள்ளேயே ஒரு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருக்குது. மேலும் வந்து இந்த மாதிரி நடக்கிறத வந்து நானும் இதில் இணைஞ்சி போராடணும், செய்யணும் அப்படின்ட்டு இணைஞ்சி என்னோடய சோசியல் சர்வீஸை செஞ்சிட்டு இருக்கேன், மேலும் செய்வேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. Rani, mother of a victim, a resident of Dharmaburi district, has 2 children, a son studying in the 10th standard in a government school and a daughter aged 13 years studying in the 8th standard. Rani and her husband are poor, daily wage laborers living in a rented house. Her husband is a person with disability. The family earns their livelihood by collecting, sorting and selling scrap iron and plastic materials. Near the shop, a godown used for storing scrap iron and plastic materials is operated by Palani Murugan, who is the husband of Manikam's sisters. On the 9th June 2025, Rani received a call from her daughter's class teacher informing her that the child had disclosed 2 cases of sexual assault that happened about 2 years ago. On one occasion, when she was alone at home, Palani Murugan locked the door and sexually assaulted her and threatened to kill her if she revealed the incident, due to which the child did not inform anyone at the time. Again, during the summer vacation of 2025, when the child went to the godown along with the father one day, Palani Murugan took her separately and committed sexual assault again. Even when the child said that she was in pain, he did not leave her. That child did not inform her parents, as she thought that they would not believe her. After the vacation, when the 8th standard classes commenced, a sexual abuse awareness program was conducted in the school, after which the child gathered courage and informed a class teacher about that incident. And the class teacher in turn informed the child's mother, Rani. Subsequently, a complaint was given at the Dharmaburi All-Women Police Station. A case was registered against the accused under the POCSO Act. An investigation was conducted. At present, the accused was being released on condition bail. After the accused was released on bail, he threatened Rani and her family with dire consequences if they did not withdraw the case. He also sent hired hooligans to physically threaten her. Then, with the help of AIDWA, she submitted a petition to the SP of police and asked for his bail to be cancelled because he was giving repeated threats. But the police did not listen to her pleas and only called him once to warn. However, the threats continue, and so does her struggle. Today, Rani continues to actively work with AIDWA and has recently joined the democratic movement as an active member. Thank you. We are very proud to introduce her. Thank you. Only tell them to essence only. No name. No. Over. Yeah, now I'll request our All India President, Comrade PK Srimati, to felicitate her. Comrade Srimati. Come to this.
Go in the front. You also go. They're all the achievers. These are the beings who discuss okay, please come. Mariam, you come. रानी तुम संघर्ष करो, एडवा तुम्हारा साथ है। साथ है, साथ है। रानी तुम संघर्ष करो, एडवा तुम्हारा साथ है। साथ है, साथ है। थैंक यू रानी। जो स्लोगन नहीं सुने तो कोनोनिका ने सब हिंदी में समझा दिए सबको। आवर नेक्स्ट स्पीकर इज बीबी रुखसार. शी इज फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. शी इज सिंबल जस्ट नॉट ऑफ रेजिस्टेंस बट ऑफ अ फाइट. She was also married to an already married man at a very early age of 15. How she had to lead her life and how she fought with the odds, she will tell herself. Bibi Rukhsar. मैं कर लूँगी। मैं बिहार जिला अररिया से बीबी रुखसार। मैं आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई और ज़्यादा तो हमारे पास टाइम नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी। ये जो मैं औरत के खिलाफ़ या फिर लेडीज़ के खिलाफ़ या फिर जो भी हो, मैं उनके साथ हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले ये तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे वो जो भी हो, ये रेप बलात्कार ये तो नहीं होना चाहिए, गलत है। सबसे पहले मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम आम जनता का ही जब गुंडों को इतनी आज़ादी मिल जाएंगे, जहाँ पाएंगे वहाँ दिन दहाड़े गोली चलाएंगे, किसी का रेप, किसी का मर्डर, घर घुस के बलात्कार, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। ये आज हमारे साथ हो रही है, कल आपके साथ होगी, परसों हमारे आने वाले बच्चों के साथ होंगे। तो हमें अभी से ही आवाज़ उठाना चाहिए और हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ तक आई हूँ और आप लोग से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है, ये क्या सरकार है यार, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। 2 लाख देंगे, भूमि दान देंगे, गरीब का सहायता करेंगे, क्या सहायता हो रही है गरीब की? यही दिन दहाड़े गोली और घर घुस के रेप, छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप। अरे रान मोसेमात का कोई भलाई हुआ क्या? 1100 दिया वृद्धा, और क्या? अरे 1100 में क्या 1 महीना खा पाएगी? तलाकशुदा औरत नहीं खा पाएगी, नहीं हो पाएगा। हम लोग मांग किए थे 3000 का, हुआ 1100। ये क्या है? ये कौन सी सरकार है? कहाँ हमारी मांग पूरी हो रही है? अब जो है ना, आपकी जो अनुभव है वो बोलो ना। आप क्या आपकी जो ऊपर बीते हैं अनुभव वो बोलो। अच्छा, मुझे वो बोलना है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ा अपने बारे कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मैं एक शादीशुदा हूँ, हमारे पास 2 बेटियाँ हैं और तमाम कितने ज़िला में भी ऐसी औरत होती हैं जो छोटी उम्र में तलाकशुदा हो जाता है, या फिर उनके पति डेट कर जाते हैं, या फिर उनके पास 2-4 बच्चे होते हैं तो पढ़ाने की लिखाने की ये थोड़ा संभव है ऐसे महंगाई में। तो मैं ये गुजारिश करती हूँ कि अच्छा स्कूल हो, हम गरीब को लिए भी और आम जनता के लिए भी। और धन्यवाद। रुक जाओ, रुको रुक जाओ थोड़ी देर।
I think she was little tensed and worried. So she mixed many things together. The papers you have, the file you have has every story. सबकी ये जो stories है आपके पास जो file है उस पे दी हुई है, आप सब पढ़ सकते हैं. रुखसार ज़्यादा बोल नहीं पाई, but her story is also, as you all can read. She was also married to an already married man at a very early age, and she went through all physical and financial torture just because she gave birth to a baby girl. And after that, how she came in contact with AIDWA and how she then learned to fight and is still fighting in Bihar, that all she has to say. I think we all are very, impressed with her story. With that, she also tried to narrate the condition of women in India and how government is neglecting it. Such a nonsensical government it is. That also she didn't forget to tell us. So thank you, B.V. Rukhsar. Now I'll request our General Secretary, Comrade Mariam Dhawale, to felicitate her. Comrade, please. आपका सम्मान करेंगे. हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. Now, our third symbol of resistance is Divya Arul. She's a mountaineer from Puducherry, a very far off village from Puducherry. At the age of 30 only, she has achieved. She has climbed the Mount Elbro, the highest peak of the Europe. At very early age, she had to earn to complete her dream, also to chase her dream. Let us hear out her story from her own, and she'll speak in English only. Come. A very good morning to all my wonderful women, and I'm Divya from Puducherry. Like I'm comfortable with my own language, but I try to speak in English also. நான் வந்து ஒரு கடகோடி வில்லேஜ்லேருந்து வரேன், பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கடகோடி வில்லேஜ். அது என்னோட பேரியராக என்றைக்குமே நின்னது கிடையாது. அந்த லிமிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் தான் பிரேக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே மவுண்டெயின்லேருந்தும் மவுண்டனரிங்லேருந்தும் நான் எடுத்துக்கிட்ட லெசன் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஹவ் டு ஷேர் சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் லைக் வாட் எவர் திங் ஐ டேக்கன் அஸ் அ லைஃப் லெசன் ஃப்ரம் மவுண்டனரிங் அண்ட் மவுண்டெயின். That is what, like, we have to break our limits. Only we can break our limits. So எவ்வளோ பேரியர் நம்ம முன்னாடி இருந்தாலும், எத்தனை லிமிட்டேஷன் நமக்கு சொசைட்டி வச்சாலும், நம்ம ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வச்சாலும், நம்ம ஃபினான்ஷியல் க்ரைட்டீரியாஸ் வச்சாலும், we have to break. If you are focused in your dream, if you are focused in your goal, you will be there and you will achieve it. For that, I am the best example. I am like 2021 I done a suicide because of my business loss, which I done and which I started in 2018. I lost nearly 65 lakh. ஆனால் அந்த சூசைட் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்த தைரியத்தை என் லைஃப்பில் நான் என்னைக்கு டேர்ன் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சேனோ, ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த சக்ஸஸ் அண்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த விமென் who are not like நம்மளோட தைரியத்தை எதுக்கு போடணுமோ அதுக்கு போடணுங்கிற கெட்ட உதாரணமாக இல்லாமல் நல்ல உதாரணமாக நான் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்ச அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஐ சேஞ்ச்ட் இட். ஐ அச்சீவ்ட் ஈரோப் கான்டினென்ட்டோட ஹையஸ்ட் மவுண்டன் மவுண்ட் எல்ப்ரஸை ஃபர்ஸ்ட் புதுச்சேரியை நான் கான்க்யூர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் மவுண்ட் கூன் 7,077 மீட்டர் டில் டேட் தமிழியன் ஏறின ரெண்டாவது உயர்ந்த மலை. அந்த பீக்கை ஃபர்ஸ்ட் தமிழியனா நான் கான்க்யூர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஹைலி டெக்னிக்கல் பீக் ஐ கிளைம்டு வித் அ மேல் டீம் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் மேல் டீம் ஆஃப் அர்ஜென்டினா ஆர்மி. ஐ அம் த ஒன்லி விமன் ஹூ கான்க்யூர்ட் திஸ் இயர் ஆஸ் அ சிவிலியன். மவுண்ட் கூன் வந்து அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ப்ரைட் ஹானர். ஐ தேங்க் மை சுதாமா ஃபார் this to be inviting me for this wonderful session and all. Thanks for all. And என்ன மாதிரியே ஸ்ட்ரகிளில் இருக்கிற ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி, ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது அதை பண்ண முடியறதுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக லைக் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமல்
அந்த path கிடைக்காம இருக்கிற கேர்ள்ஸ்க்கு now I'm like mountaineering educate பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், because I'm certified for mountaineering, so that I started to educate some girls and all. இதை நான் இன்னும் பெரிய லெவலில் அதிகமாக பண்ண கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர்லேயும் நிறைய பண்ணுவேன். And I'm looking for my Mount Everest and Mount Lhotse 8,000 together from South India, first female 2026 April I going to do. அதையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு again I will stand in front of you all. Thanks for this opportunity. I'm tired listening to her all dreams. How will she all do? Okay, I'll request our Vice President, Comrade Sudha Sundaraman, to just brief her story in Hindi. She already spoke. I will just sort of see the things that you can achieve if you have the determination. That is something that she has actually demonstrated over here. So, I have to speak in Hindi. ये जो कर दिखाई है उससे हमें एक साहस मिलती है कि देखो अंदर में एक हमारी जिद हो तो कुछ भी हम कर दिखा सकते हैं। ये एक बहुत पिछड़ी हुई गांव से निकली हुई लड़की है और उसके वो जो गांव है वहाँ पे उसकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई, उसके पिताजी कोई और शादी कर लिए, इसका कुछ भी रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और बहुत मेहनत उसके घर में बहुत मतलब गरीब घर है और वहाँ पे वो कुछ डायरिंग करी, उसका भी कुछ निकला नहीं। फिर वहाँ पे वो एक मीट शॉप रख के उससे कुछ गुजारा चलाई, वो भी मतलब कोविड के टाइम में वो बहुत ख़राब वो हो गया। तो इसलिए उसने अपने ही हिसाब से कहीं से उसको मोटिवेशन आया कि मैं तो देखो पर्वत को चढ़ूंगी और पूरा एक माउंटेनियरिंग का उसने ट्रेनिंग अपने आप निकाल के ट्रेनिंग लेकर वो इतने सारे जो हमारे देश में और बाकी देशों में भी वो जाके पूरे बहुत सारे जो पर्वत के टॉप है उसको उसने चढ़ दिखाया है। तो कोई भी सीमा नहीं है और हमारे ही लोग, हमारे ही जो साथी बहनें हैं वो हमारे सामने ये दिखा रहे हैं। दिव्या पुदुचेरी से हम सब की ओर से उसको एक बार जिंदाबाद करते हैं। Now I'll request our Vice President, Comrade Vasuki, to felicitate Divya. You also been on here? Come, Mariam, come. श्रीमती Come. Please, basketball Asian. Next one is another. Okay. हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेंगे, जीतेंगे। Our next symbol of resistance is Razia Bano. She is from Bikaner, Rajasthan. She is an MIF victim. I think many of us have met her in our campaign of MFI. I'll request her to come on stage and please speak for herself. Razia Bano, Bikaner, Rajasthan से। नमस्कार मेरे सभी साथियों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी को कि मैं आज इस मंच पे मेरे छोटी छोटी उपलब्धियों को देख के मुझे आज इस मंच पे पहुँचाया। धन्यवाद एडवा का। और वैसे तो औरतों का ना पैदा होने के बाद थोड़ा संघर्ष चलता है, लेकिन मेरा तो पेट से ही संघर्ष चलने लगा था। क्योंकि मेरे पापा 3 बच्चे थे, उनके लड़के ही थे, उनको नहीं चाहिए थी लड़की। क्योंकि पहले ना
लड़कियां पैदा होने नहीं देते थे। और सबको पता होता है कि पहले तो वो सोनोग्राफी में पता चल जाता था, तो 3 बच्चे और जरूरी था उनके लिए, तो वो चौथा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे। मम्मी चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि पेट में लड़की है, लेकिन मैं अपनी माँ के पेट से संघर्ष कर रही हूँ। तो आप देख लो, पैदा होने के बाद जैसे जैसे, हालांकि मेरे पापा सरकारी में थे, सारा पूरा परिवार, लेकिन उनके मानसिक संकटता ना, वो पितृ शक्ति के वाले थे। वो चाहते थे घर में सिर्फ हमारा ही राज, बेटी पैदा ना हो, सिर्फ लड़के पैदा हो, क्योंकि मैं पढ़ने की भी ललक थी और घर में बस पर्दे में रहो, पर्दे के बाहर नहीं। और पढ़ने की भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, तो कठिनाई से उन्होंने मुझे 8वीं 9वीं तक पढ़वाया, वो भी किसी के साथ ले जाके। तो मुझे ना पढ़ने की बहुत लालच थी, क्योंकि भाइयों की किताबें देखती थी तो मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी पढूं, लेकिन मुझे पढ़ने का कोई वो हो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जाके मुझे पढ़ाई का थोड़ा बहुत मुझे मतलब शिक्षा हुई। उसके बाद 18-19 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो भी मतलब ज़्यादा परिवार पैसों वाला था ना, हमारा परिवार तो अच्छा था, लेकिन उसके उपरांत विपरीत जो वो थे मेरे ससुराल वाले, तो वो थोड़ा गरीब थे, मतलब मजदूर तबके के थे, तो वहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ा। तो वहाँ जैसे मेरी सास कमाई करती थी, ससुराल में मेरे मजदूर थे ससुर, तो वो महीने में 20 दिन कमाते थे, 30 दिन घर पे बैठे रहते थे। तो सास ही बेचारी कमाती थी और उनके 4-5 बच्चे थे। और जो मेरे शादी में गहने वगैरह दिए तो रोज़ मांगवाने आते थे, वहाँ से थे, मतलब शुरू से ऐसी हालत हो गई। तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे गहने ले लो, बेच दो, मुझे ऐसे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके गहने भी रख दिए। ऐसे ऐसे करके संघर्ष होता रहा। फिर सास को कैंसर हो गया, पहले टीबी हुई, फिर कैंसर हो गया, क्योंकि बड़ा मैं ही थी, मैं 4-5 में बड़ी मैं ही थी, तो सारा जिम्मेवारी बड़े बेटे ने उठा ली थी। 4 भाइयों की, एक बहन की, छोटी ननद थी मेरी, उसकी शादी करने के लिए। तो वो फिर चले गई बाहर, उन्हें 18-19 साल बाहर रहना पड़ा। तो उस बच्चे से पहले तो मैं 4 देवर थे, एक ननद थी, उनकी शादी की, उनका कर्ज उतारा 18-19 साल तक। तो फिर मेरे बच्चे पैदा हो गए, उनको लालन पालन के लिए उनका भी कुछ करना था। लेकिन उनकी शादी की 18 साल करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहता था, क्योंकि सास और ससुर और ननद रहती। फिर सास को कैंसर हो गया, वो सारे पैसे तो वो कैंसर में चले गए, उसमें भी बहुत कर्जा लिया। बेचारा वो मेरे हस्बैंड थे, वो बहुत अच्छे, अभी भी इतने अच्छे मेरा देते ध्यान, उनके खुलेपन में मैं आज यहाँ पे हूँ। पिता तो मैंने देखे ना बचपन से ऐसे थे, खा लो पी लो अच्छा, लेकिन वो उनकी आज़ादी नहीं थी। लेकिन मेरे जो पति हैं वो गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, और अभी तक उन्होंने उनकी वजह से और एडवा की वजह से आज मैं इतनी ऊंची आई हूँ। फिर जैसे तैसे उनकी शादी की, फिर बच्चों की शादी के चक्कर में फिर मुझे धीरे धीरे लोन लेना पड़ा। लोन लेने के बाद पीछे पहले उनकी शादी कर्जा उतारा, 18-19 साल उन्होंने बाहर कमाया। बाहर कमाने के आने के बाद सास की मतलब डेथ हो गई कैंसर के चक्कर में, फिर ससुर की मतलब डेथ हो गई। फिर मतलब धीरे धीरे लोन का चक्कर चलने लगा। 2014 में ना मेरा लोन का वो हो गया, और बच्चे भी मेरे बड़े हो गए थे, एक तीरंदाजी था, एक मिक्स मार्शल आर्ट में था। तो दोनों ना इस 2014 में मतलब वो उनके साथ भेदभाव होने लगा। वो जो उनके अमाउंट आता था, नेशनल खिलाड़ी थे दोनों बच्चों मेरे, बहुत अच्छे थे, और लड़की भी मेरी पढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे उनका भी जो हाथ ना वो तंग होने लगा, और बच्चे भी देखने लगे कि हमारे साथ क्रिटिसाइज हो रहा है, मत भेदभाव हो रहा है। 2014 के बाद उनके जो अवार्ड आते थे, जो पैसे आते थे, वो कोच रख लेते थे, उनको जो पता चलता वो या आगे बढ़ने देते, तो उनका भी मन उब गया। मतलब 1.5 लाख लोन लेने के बाद और हमारी परिस्थिति और बिगड़ गई। बच्चों की शादी करने के बाद बड़ा वाला बच्चा जो था अपनी वाइफ को लेकर ससुराल में शिफ्ट हो गया। अब लोन उतारने वाला था नहीं, छोटे वाला था, वो बीमार हो गए मेरे हस्बैंड, तो अब लोन उतारे कौन, घर में कमाने वाला छोटे वाला रह गया। वो लोन उतारे, घर का खर्च चलाएं, खुद का खर्च चलाएं, ऐसे करके परिस्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी।
और मेरी मानसिक स्थिति ऐसे हो गई थी कि बस पूछो मत, मतलब मेरा ब्लड प्रेशर रो रहने लगा, आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि एडवा से तो मैं जुड़ी हुई थी, फिर मैंने धीरे धीरे करके ये सारे, मैंने मकान बेचा अपना, मतलब 70-80 लाख का जो मैंने मकान बनवाया था वो मैंने सिर्फ 30 लाख में सेल किया, वो भी मजबूरी में, क्योंकि आधार हाउसिंग वाले घर पे आके बैठ जाते थे कि भाई हमारा लोन चुको वरना आपका घर पे ताला लगा देंगे, वरना हम कुर्की लगा देंगे। इस चक्कर में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे करके जैसे चल रहा था समय, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा स्टेबल हुई, तो जैसे लोन के जो अभी हमारे फार्म चल रहे थे जो सर्वेक्षण के, उसके चलते मैंने कहा मैंने तो अपने देख ली, क्योंकि महिला समिति में रह के सिर्फ अपने ऊपर तक नहीं रहने देते, मैं दूसरों की भी, मैं हमारे मोहल्ले में पड़ोसी में सब लोन लेते हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वाले ना मतलब 40% से लोन देते हैं औरतों को। ओके टाइम हो रहा, ओके बस लोन के चक्कर मतलब बहुत, फिर महिला समिति सारी औरतों को मैंने इकट्ठे की और जगह जगह जत्थे निकाले, किसी की एनओसी दिलाई, किसी को मतलब लोन माफ कराए, को विधवाएं उनके लिए किए। फिर मैंने जैसे जत्थे चलाए सबको मतलब जागरूक किया कि भाई हाँ ये माइक्रो फाइनेंस वाले किसी के नहीं होते। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार है ना ये मतलब जैसे उनको प्राइवेट वालों को वैसे देते हैं, वैसे हम अपने को मतलब जनता को अपने सामने से देना है। SBI वाले हो, प्राइवेट वाले हो, कम पर्चों में, कम खर्च में, यानी कम सिक्योरिटी में सबको देते हैं, मतलब दूसरों को जैसे हमें भी लोन दे सकते हैं सरकार। ओके धन्यवाद, थैंक यू, सबका आभार, मुझे इतने यहाँ पे स्टेज पिलाने के धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। Thank you, Razia Bano. As she in detail she narrated her story. She comes from a very well-to-do family who was educated and all, but being a girl, she was not allowed to further study and got married. After that, she got married in a very big joint family. Her husband and the very poor also, very different from her own family, her maternal family. She had to struggle a lot in that joint family, financially also, physically also. And then after her husband got ill and could not earn for the family, for 3-4 children and all, she had to take loans from one MFI to another. That all story we know. We have heard also, and there are many such stories we faced. We came across. So she still is struggling. She had to sell her house. Now she has nothing. Each and every penny of the sold house, she has to give it back to the loaners. So now she is still struggling to survive, and now she is with AIDWA. She came across some AIDWA activist, and now with AIDWA, as she said, it is not to fight for her alone. She is now involved in fighting for other women also. So it's quite an inspiring story, and she narrated it also very well, and it is there in details in our notes also. So thank you, Razia. Now I'll request our treasurer, Comrade Punyavati, to come and felicitate her. Comrade Punyavati. I'll request Comrade Srimati and Comrade Mariam also to be here. We are going to felicitate one more sports person, Viha. Viha is the national basketball player. She is the first girl basketball player from Telangana. She is also first captain and vice captain
Telugu captain and vice captain under 16 basketball team. So I'll request Comrade Kanonika to felicitate her. She will come. Yeah. It's 1 minute is only 1 minute. In short. Sorry. Good morning, everyone. You have to go down. First, I'm very honored to be felicitated today, and I would like to thank AIDWA and everyone here for their support for women athletes. AIDWA has always supported athletes who have spoken up about sexual harassment or unfair treatment, and they have also stood with women who have spoke up and protested for justice, and they made sure their voices were heard. AIDWA reminds us that sports should be a safe and respectable place for women where female athletes should be able to pursue their dreams without fear or discrimination. I would like to thank AIDWA for helping girls like me and female athletes all around the world to pursue the dream and follow their dreams. Thank you. Please ask Marty. 1 minute about our highlights. Captain of Indian women basketball team for 3rd Asia Youth Women's 3x3 at the Asia Cup held in Bahrain, October 2025. Vice captain of the under-16 Indian women basketball team at the FIBA Asian Cup held in Malaysia, August 2025. Under her leadership, India clinched the championship title and has stood out at the highest sector of the tournament. She is the most valuable player of the championship. Represented India under 16 Sabah Championship in Maldives, where the team once again emerged victorious. Viha was a standout performer, finishing as the top scorer of the tournament. Represented Telangana state 8 times at national level tournaments and captained under 16 under 18 Telangana. Secured 2 national gold medals in both under 17 under 19 categories at the prestigious ISO national championships. Now this session is over. I express my wholehearted thanks to our dear sisters, Comrade Tabasi and Comrade Prachi, to convene in a better, handling in a better way. Express my thanks on behalf of AIDWA. Now we are going for the next agenda. That is our sisters are here from different organizations, our fraternal organization, then the greetings. But our delegates are going and coming and going and coming. Some indiscipline is going on. So too much disturbance. I don't know why. Whatever you want, the drinking water, then you can tell. But somebody is going outside, somebody is coming, like that. So please, very important,
agenda, that is greetings from our sisters, General Secretary of National Federation of Indian Women, Comrade Nisha Singh will speak first. So friends, मैं थोड़ा सा माइक को इधर कर लूँ तो ठीक रहेगा। मेरी बहुत ही वरिष्ठ साथी वरिंदा जी, सुभाषिनी जी, पीके श्रीमती जी, मेरी इधर बैठी दोस्त मरियम जी, पीछे जगमती जी। जगमती जी को याद रखना पड़ता क्योंकि वो मेरे पड़ोसी स्टेट से हैं इसलिए। और मेरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस और देश भर से आई हुई डेलीगेट साथियों, बड़ा रंग बिरंगा खूबसूरत माहौल है, तो लगता है कि पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा हो गया। मैं भारतीय महिला फेडरेशन NFIW की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 14वां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ क्योंकि मैं भी इधर ही आपके तेलंगाना में इन दिनों डोल रही थी। साथियों, बहुत सारे सवाल वृंदा जी ने अपने की नोट में खड़े किए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मणिपुर के अंदर वायलेंस हो रहा था तो आपकी यही दोस्त वहां उन बहनों के साथ जाके खड़ी थी और सेडिशन चार्ज हमारे ऊपर है। कौन डरता है? भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं डरता और हम तो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। लड़ेंगे उसी मुस्तैदी के साथ, अपनी बहनों के हकों की पैरवी करते हैं और करते रहेंगे। ये भरोसा तो अपने देश भर की बहनों को हम दिला ही सकते हैं। और क्या बात करें देश के हाकिम की, जो कभी वीबी जी राम जी ले आता है, कभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करता है। हम लड़े, हमारे साथी लड़े 33% वीमेन रिजर्वेशन बिल के लिए और इन्होंने नाम दे दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अरे भाई, किस बात क्या नारी शक्ति वंदन? ये चार बहनें तो अभी बोल के गई है ना यहाँ पे कि क्या हो रहा है देश के अंदर। ये तो हर जगह पे वीमेन वायलेंस ही नहीं, हर तरह के अत्याचारों की हर हद पार कर दी इन लोगों ने। और ये फूल बरसाएंगे हेलीकॉप्टर से जब RSS की यात्राएं निकलेंगी। और एक खड्डे में गिरा हुआ नौजवान जो अपनी लाइफ की भीख मांगता है, ये उसको बचा नहीं सकते। ये बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी और विश्व गुरु बनने की। अरे कौन सा विश्व गुरु? रोजगार नहीं, सुरक्षा नहीं, अत्याचारों की हद। नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस लगातार चल रहा है। आप अपने देश के लोगों को तो सुरक्षित नहीं करते और कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। तो इसलिए इनके थोथे दावों में कोई भी नहीं आना चाहता। मुजफ्फरनगर के अंदर क्या नहीं हुआ कौन नहीं जानता। दिल्ली के अंदर बहनों की इज्जत लुटती कौन नहीं जानता। पंजाब के अंदर क्या हुआ वो कौन नहीं जानता है। राजस्थान के अंदर दलित अत्याचारों की सबसे ज्यादा पराकाष्ठा है, कौन नहीं जानता। और हमारे SIR के नाम पे जो थोपा गया है, हमारे वोट का अधिकार, हमारी नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की साजिशें 14 राज्यों में तो कर चुके। तो हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। मेरे माइनॉरिटी के साथियों को किस तरह से टारगेट करके ये लोग बेदखली की बात करते हैं कि जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। भैया ये देश हमारा है, बहनों ये जगह हमारी है। पाकिस्तान में जाना है तो RSS वाले जाएं, हम तो यही रहेंगे, यही देश है। तो इसलिए इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ नाम बदलना आता है। मुगल सराय को बना दोगे दीनदयाल उपाध्याय।
कौन सी कुर्बानी दी है दीनदयाल उपाध्याय ने? हमारे इलाहाबाद को कर देंगे प्रयागराज। अरे कौन सा प्रयागराज? जिस महाकुंभ के नाम से लोगों को मरवाया इन लोगों ने, भगदड़ के अंदर हमारी बहनें, उसकी भेंट चढ़ी, बच्चे, नौजवान, बूढ़े लोग मरे, ये वो महाकुंभ है? तो मैं तो कहती हूं हमारा महाकुंभ तो ये है, ये जिसके लिए हम लोग 3 साल इंतजार करते हैं। कल एक चंडीगढ़ की बहनों का डेलीगेशन आया हुआ था, उनका फोन आया सुबह सुबह कि साथी हमको पार्टी ऑफिस देखना है। अरे मैंने कहा क्यों देखना है? बोली हमारा तो हरमंदिर साहब वही है। बहुत बड़ी बात है ये। उन्हीं साथियों से पता चला कि आज से 50 साल पहले हमारी उन बहनों ने जो किया, अपने नाना जी की अस्थियां किसी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, करतारपुर साहब नहीं लेके गए। कहां लेके गए? हुसैनी वाला में, जहां पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि है। तो हमको कुछ नए नवाचार शुरू करने हैं। तो इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी, मुझे पता बहुत सारे एजेंडाज हैं, हमारा बिजनेस बहुत लंबा होता है। इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर हमको देश की राजनीति की दिशा भी तय करनी है, सब तय करना है। बहुत सारे रेजुलेशंस भी आपके बीच में आएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि लेफ्ट यूनिटी को और मजबूत करना है आने वाले दिनों में। हमारी वीमेन यूनिटी जो 7 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती थी, वो बैठी हैं दूरी उसकी वृंदा जी इधर, तो उसका परिवार थोड़ा अभी बढ़ा हुआ है। अभी EMS जैसे साथी और भी संगठन उसका हिस्सा बने हैं। तो मुझे लगता है कि हमको 7 सिस्टर से 9, 10, 11 जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमारे साथ लाना है और हमारी एकता को बढ़ाना। साथियों 2-3 नारे तो दूंगी मैं, वो आपको जवाब भी देना है और उसी से पता चलेगा कि हम सब साथ हैं। तो आवाज दो, हम एक हैं, ठीक है? आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। लेफ्ट यूनिटी जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी पंजाब वाली भी बैठी हैं, भैना दा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी राजस्थान की बहनें भी बैठी होंगी। एको रखो चेतो रखो, एको रखो चेतो रखो, एको रखो चेतो रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सफल कामयाब हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए। धन्यवाद। निशा जी Within a few minutes, Nisha ji made a very inspired speech. Thank you, Nisha ji. Next speaker, Comrade Nagamani, Secretary, National Secretary of All India Progressive Women's Association. I invite Comrade Nagamani. AIDWA అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కామ్రేడ్ శ్రీమతి గారు, అలాగే మరియన్ దావలే గారు, సీనియర్ కామ్రేడ్ బృందాకరత్ గారు, పుణ్యవతి గారు, శాంతా సిన్హా గారు, ముఖ్యంగా రోహిణి గారు, అలాగే ఇషా గారు, శోభా గారు, రమాదేవి గారు, లక్ష్మి గారు, అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి సహచర కామ్రేడ్స్ అందరికీ, అలాగే ఈ 14 మహాసభకి విచ్చేసినటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుండి విచ్చేసినటువంటి సోదరీమణులందరికీ కూడా ఆల్ ఇండియా ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ తరఫున విప్లవాభినందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
Comrades, it gives us great pleasure to gracefully acknowledge the invitation extended to AIDWA for the National Conference of AIDWA titled Oppose Imperialism, Combat Manwar, Uphold Women's Rights, to be held from 25th to 28th January, Hyderabad, Telangana. At this juncture of increasing imperialist onslaught on national sovereignty, fascist attack on constitution and democracy, and the resurgence of Manwadi ideology, we reiterate that women's movement in solidarity with the movements of the working class, farmers, tribals, and students can only give a befitting blow and bring revolutionary changes in the society. We are facing the twin challenges of oppression and exploitation of the profit-mongering corporate world and the divisive forces of Manwadi in our daily life. There are all-out attempts to snatch away our constitutional rights, guaranteed rights, including equality, freedom, and fraternity. And there is a big threat to the idea of a just and equitable society. Today, in the process of SIR, women's names are being removed from the voter list. Laws are being enacted in the country that are undoing the hard-won achievements of the women's movement. In BJP-ruled states, the Uniform Civil Code is being implemented, which is in reality restricts women's freedom to lead their lives according to their own choices. Violence against Muslim, Dalit, and minority women is increasing across the country. On the other hand, from women wrestlers to the Ankita Bhandari rape and murder case, we have witnessed how the government protects the perpetrators of abuse, rape, and violence. Rapists like Asharam Bapu and Ram Rahim are being released from jail, thereby encouraging a culture of rape under the BJP's regime. Violence against women has assumed alarming proportions. Trafficking of brides for sale is a recent addition to the existing patriarchal violence. The marriage market is getting further commodified with this purchase of girls, thereby attacking women's self-respect and liberty and pushing them into sexual bondage and slavery. On the contrary, when young men and women marry by choice, they face honor killings. A society steeped in such casteist, Manwadi ideology commits female ferticide and purchases girls for marriage with identical contempt. Therefore, for a dignified life and equal rights, the country needs a broad and powerful women's movement, and the communist women's organizations must take the lead in this and work to unite all women's organizations. The historic demand of tribal masses of Dhule in Maharashtra in response to drought that paralyzed agriculture and employment guarantee scheme in 1974 was backed by left organizations and fruitioned into MGNREGA, which sustained the livelihood of crores of rural women and families until now. The recent V.B. Gramji Act is a reversal of this right to livelihood and needs to be fought tooth and nail. In this era of deepening economic inequality, the Election Commission's SIR exercise is affecting the women adversely by disenfranchising lakhs of women. AIDWA has been constantly fighting against the onslaught of patriarchal, casteist, communal forces, be it domestic violence, workplace harassment, attacks on intercaste marriages or on minorities. AIDWA is spearheading struggles against the devaluation of women's labor, under contract labor and welfare schemes, and demanding regularization, wage increase, pension, PF, and workplace safety. The women's movement has consistently engaged in progressive reforms
in personal laws, be it the rape, the dowry prohibition, the domestic violence, the human trafficking, the sexual harassment at workplace, the gender bias in family laws. The equal representation of women in governance is still a distant dream. There are all-round attacks on women indicating deepening economic and social turmoil. There is an urgent need to build a strong and powerful women's movement and forge strong ties with progressive and left women's organizations to fight the fascist Manuvadi regime and assert women's rights. AIDWA wishes a grand success to AIDWA's National Conference and expresses solidarity with the struggles of women to ensure a better social milieu on the ideological principles based on constitutional morality and to uphold the hard-won rights and legacy of progressive and left women's organizations. Thank you. Thank you so much, Nagmani. Next, I am inviting National Secretariat member of All India Mahila Sanskritik Sangadan leader, Mrs. Shobha. All the dignitaries on the dais, dear friends, comrades and delegates. Until now, you have heard of the speeches of many guests and leaders of AIDWA, where the problems of women is being placed before you. Today in 21st century, even now we see a girl child cannot be born. There is female feticide, infanticide, there is illiteracy, especially where women are affected, acid attacks, honor killing, dowry deaths, and many more such problems. And here we see the approach towards women is so old. The feudal ideas are very, very rampant in our society even today. Friends, the seed of this is in our freedom movement. The freedom movement where the uncompromising trend was not in the forefront, because of which religion and old values, feudal values have come to the fore. The uncompromising trend where the leadership was given by Bhagat Singh, Netaji Subhash Bose and many others like them did not come to the forefront. Religion became mixed with the freedom movement, because of which even today we see many of such problems. There are no democratic values and approach, especially towards women. Only in our constitution it has been enshrined, all are equal, man, woman are equal. But in reality, we see at every step of our life, the inequality what we are experiencing. Dear friends, we have to fight against the unfinished task of our freedom movement. The democratization of the society is left to us. Along with it, the capitalist attack, where the money, the business houses, how with various policies, that is also placed here. The policies because of which there is enormous crisis, there is poverty, unemployment, such issues. So women, along with the patriarchal fight, the domination, we have to fight patriarchal domination, along with that the economic onslaughts. And now the
oppressive forces, the capitalist class with its design is bringing down the culture. And because of that, today in every house in the name, with the mobile phones we see, where you get the dirty culture in our hands. Our children have become victims of that. There is a problem of depression, suicide. So friends, now we are in a very congested, very difficult, critical situation. So together we have to fight the onslaught of the capitalist class and the feudal values which are still there. Together they have made the life of the women a very big hell. So I, on behalf of All India Mahila Sanskritik Sangathan, thanking AIDWA for inviting us for this conference and wishing the conference a very grand success, I would like to conclude my talk telling that the left and democratic unity is very much necessary, and all of us together throughout the country, we will stand for left and democratic unity and build many more such movements to face the onslaughts on women and the common people, the downtrodden, the working class at large. Thank you. Women's unity, Zindabad. Left and democratic unity, Zindabad. So as a symbol of left unity between the women's organizations, we will stand here hand in hand and hope to take this struggle forward in the coming days. Come. One more, you please touch me. First we will have. Yes, then can you come? Now, as a part of the concluding of the inaugural session, ये उद्घाटन सत्र के अभी अंतिम स्तर पर हम आ रहे हैं, तो मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा पी.के. श्रीमती को दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण अभी करें. I request our national president P.के. श्रीमती to deliver her presidential speech. What are you saying? After your speech. Yes. Dear friends, please be silent. Some disturbance are coming on. Why it is? Here it is, there is something is going on. Please volunteers. Dema, the presidential speech is going to start. Please be seated there.
Just Lakshmi disappeared. Just to give the final. No vote of thanks. Presidential speech and it's over. My dear sisters and brothers and comrades and dear leaders and all, dear all, at the very outset, I extend my warm greetings and heartfelt pleasure to our sisters, those who are present in this inaugural session, and delegates who have traveled from 26 states across this vast country to gather here from the 25th to 28th of January for the 14th National All India Democratic Women's Associations Conference. Your presence here is not merely an attendance. It is a social statement of solidarity, struggle, and collective strength. Even though conditions conducive to our organizational activities do not exist in many parts of India, I warmly embrace my dear sisters, leaders like you, who with great energy continue to lead action and struggles all over India. For the first time, the revolutionary soil of Telangana, a land soaked in the blood of peasant and tribal resistance, witnesses this historic gathering of militant womanhood. I see the beating heart of resistance, the hands that carry our legacy, and the future generation that refuses discrimination and injustice. Our AIDWA, born in 1981, now stands at 45 years. This is not a middle age of complacency, but a matured force of resistance. Through decades of struggle, sacrifice, and unwavering commitment, AIDWA has emerged as the strongest women's organization in India. We have stood beside women not as charity, but as comrades, like an iron wall against oppression. No other organization has consistently raised its voice for women with the same clarity, courage, and credibility that AIDWA holds today. Our heritage is not decorative. It is forged in struggle, resistance, and relentless battles against patriarchy and exploitation. Standing here in this conference venue, I remember Comrade Mallu Swarajyam with a profound respect. She led revolutionary struggles alongside farmers and tribal communities against the feudal and oppressive forces of the Nizam. At a time when leadership was monopolized by men, she stood tall as revolutionary woman. She was not just as a leader, as an active freedom fighter and vice president of AIDWA, she embodied courage, conviction, and class consciousness. The roads we walk today carry the footprints of those who dared to challenge power and speak for the oppressed. Our journey from 1981 till today has been one of resistance, resilience, and relentless commitment to women's emancipation. As we begin this conference, we reaffirm our motto with unwavering clarity: oppose imperialism, combat manuvads, uphold women's rights. It is there. Comrades, today is January 25th. Tomorrow, 26th January, Indian Republic Day. After 76 years of Republic of India, as I speak to you in January 2026, I ask, what do we see within our nation today? A country once celebrated for its knowledge, secular fabric, and commitment to gender equality now stands in one of its darkest political moments. Millions of women and children are denied basic rights, shelter, food, education, healthcare, and dignity. Our main slogan was, you remember, life with dignity is our right. Don't forget it.
Women are still forced to choose between hunger and survival. The reality is brutal. Poverty is increasing day by day. No job, no food. The rich grow richer and the poor grow poorer. The women are suffering a lot. Girls continue to be treated as second-class citizens. Women in states like Haryana, Bihar, and Uttar Pradesh, son preference remains openly entrenched. Every day, newspapers report rape, dowry deaths, honor killings, acid attacks, and female infanticide, even when most crimes remain unreported in this democratic country. Under the rule of this Sangha Parivar, violence against women, violence against Dalits, violence against minority, it is continuously going on. It has intensified. Doesn't our society today resemble a page torn from the Manusmriti? What happened in Unnao stands as a horrifying indictment of this system. Our leader, Comrade Brinda, in her speech mentioned about that. A POCSO survivor, that is an MLA, was pushed to attempt self-immolation simply to be heard. Her father died in judicial custody. Yet, the Delhi High Court, what was the judgment? It was shocking. The judgment suspended the life sentences of Kuldeep Singh Senegar because he is a BJP leader, he is a BJP MLA. He is very close to Prime Minister and UP Chief Minister. She is a former MLA and rapist. But after that, the appeal came. We welcome the Supreme Court's stay on this order. But let us be clear. When a survivor must risk her life to seek justice, it is not merely delayed justice. It is justice denied. AIDWA stands firmly with every woman who refuses to bow before oppression. We teach our sisters to question power even when they are silenced, threatened, or shooed away. Let us also speak about the systemic targeting of religious minority women. The BJP government's attempt to disenfranchise them through NRC and CAA failed. So they introduced the most barbaric electoral manipulation in the history of our democracy, Special Intensive Revision, SIR. Who are these special people? They are largely women from religious minorities, those most likely to resist BJP's atrocities. In West Bengal, a large percent of women's names were removed from the voter list. We came to understand from media. In Bihar, over 20 lakhs women vanished from electoral rolls, all over 65 lakhs. This is not an administrative error. It is a political conspiracy to silence women's voices. Do we understand? The right to vote, a fundamental democratic right, is being stripped away from women. We should take care. Why? Because women are the backbone of this nation. They understand that when women become truly empowered, if they are truly become empowered, this government will no longer be able to distract the masses with idols and temples. They will have to answer on education, healthcare, employment, and welfare. In such an outrageously brutal nation scenario, it is not just our duty, it is our moral responsibility to rise, resist, protest, and protect every woman those who are facing injustice. Now, let us turn in MGNR area. 2/3 of India lives in rural areas. The UPA one government under Dr. Manmohan Singh enacted Manrega in 2005, guaranteeing 100 days of employment to rural families. For millions of women, this was not just a scheme. It was dignity, food, and survival. It was an act. Today, the BJP government has replaced it with VBG Ramji. This is not merely a name change. It is an ideological attack on Gandhi's legacy and the right to work. The new framework centralizes power
while pushing financial burdens onto states. Who will suffer the most? Women will suffer. Nearly 60% of Mandega beneficiaries are women. By weakening this scheme, the government is not abolishing poverty. It is attempting to abolish the poor. Their attempt is that, abolish the poor. Similarly, the so-called labor reform that compressed 29 labor laws into just 4 is nothing but an assault on workers' rights. This is not modernization. It is a disguised rollback of hard-won protections. It is an encroaching, authoritarian structure, masquerading reform. Democracy, secularism, federalism, and basic human rights are under threat. You are forced to eat what they say, or you are assaulted. The number of Dalits and religious minorities attacked in the past few years is beyond any description. Can we call this democracy? It is called autocracy. It is fascism. It is communalism. It is absolute anarchy that is prevailing in our country today. We live in a nation where women are still questioned for studying, working, or even seeking health care. In many Dalit communities, women's literacy rate is very low. Yet the government boasts of Atmanirbhar Bharat. This is not self-reliance. It is an identity crisis imposed upon women. I am concluding. Let this 14th National Conference be not just a meeting. It is only 4 days meeting. It's not only 4 days conference, but a fireplace of resistance, igniting struggle across every corner of this country. We must fight toxic masculinity, wage discrimination, gender violence, caste oppression, and communal hatred with collective strength. All over the state, from Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Manipur, delegates are here. I don't want to give a detail about that. Everybody knows what is happening in those states. Over the past 3 years, we have worked actively, intervened in issues, and raised protest. These need to be reviewed and examined. I know you will do that. We must assess both our achievements and our shortcomings. From this conference, we should move forward with renewed decisions and fresh energy. AIDWA has led this movement since its inception, and today I call upon every comrade present here, every delegate present here, hold your heads high. Raise your voices louder. I feel you do that. Raise your voices louder and stand unshakable for every woman who need us. Let this conference be the beginning of renewed struggles, sharper, stronger, and more organized to transform the lives of women across India. My dear sisters, I am concluding my speech. Thank you, comrades, for carrying our flag more high and more high. Again, greetings to all. Thank you. Now, inauguration session is, don't get up. I am going to start some announcement. Then our General Secretary also wants to give some guideline and announcement. Now the inaugural session is over. But a few minutes also should be there. 1:15 in our timetable, 1:15 our time. 10 minutes more here. So within that 10 minutes, we will take whatever we want to do. So I invite Mariam or invite Punya. Who is speaking now? Who is speaking? Mariam. Mariam wants to speak something, some guidelines or some points to you. There are just 2 announcements. One is that when we break for lunch, after we break for lunch, the lunch arrangements that our treasurer Punyavati will announce, but
after lunch, the rally will begin. So all the delegates who want to walk in the rally, should be ready after finishing their lunch by 2 o'clock outside this gate. Then the rally of all the states will go towards Sundaraya Park, from where the entire rally will start. So keep that in mind. We will leave from here by 2 o'clock for the joining of the other women who will be collecting at the Sundaraya Park. तो जो दो ही अनाउंसमेंट है, एक तो है कि हमें जो रैली के लिए जाना है, खाने के बारे में कुछ अनाउंसमेंट है, वो पुण्यवती जी अनाउंस करेंगे। लेकिन खाने के बाद में जो रैली के लिए जाना है, तो रैली यहाँ से हमें सब साथ मिलकर, जो प्रतिनिधि चलना चाहे रैली के अंदर, ज़्यादातर तो चलना चाहेंगे ही चाहेंगे, तो हम सब यहाँ पे बाहर गेट पर 2 बजे मिलेंगे। फिर यहाँ से चलकर हम जाएंगे सुंदरिया पार्क, जो बहुत ही नज़दीक है, और फिर वहाँ से पूरी जो रैली निकलेगी सबकी एक साथ, वहाँ से रैली निकलेगी और पब्लिक मीटिंग के लिए जाएगी। तो ये एक अनाउंसमेंट था। तो हर एक जिला नेतृत्व ने अपने लोगों को 2 बजे तक बाहर तैयार रखना चाहिए प्लीज़। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि रैली ख़त्म हो जाने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो प्रतिनिधि सत्र जो है वो 7 बजे शुरू होगा। आफ्टर वी कंप्लीट द पब्लिक मीटिंग एंड रिटर्न बैक, द डेलीगेट सेशन विल स्टार्ट एट 7 o'clock. You all of you have the program in your bags. सभी के पास वो कार्यक्रम का पत्रिका है उसके अंदर, तो आप जानते हो कि 7 बजे प्रतिनिधि सत्र शुरू होगा। लेकिन रैली के बाद 5:30 बजे पब्लिक मीटिंग ख़त्म होगी, तब हम यहाँ पे वापस आएंगे। उस टाइम जो लीडर है स्टेट के, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेस से आए नहीं थे वो छप के आ गए हैं, तो अपने अपने स्टेट के डॉक्यूमेंट्स वो आप कलेक्ट कर लेना रैली के बाद और प्रतिनिधि सत्र शुरू होने के पहले। So the documents which the press were in the press, they have reached the hall. So after the public meeting, when you return back here, a bit after public meeting and before the next session, the state leaders should collect the remaining documents from the first floor reception office. And now I request Punyavati to give the instructions regarding the eating arrangement. Friends, the details regarding the dining hall and delegates. Dining hall number 1, that is just you go through the entrance, just take right and there is a dining hall. The name of the dining hall is Subhamastu. Subhamastu. In that dining hall, Kerala, Tamil Nadu, Tripura, all 327 delegates. You please go to this Subhamastu dining hall. Dining hall number 2, that is cellar. In the cellar, that is Sri Rastu. That is Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Puducherry, Paschim Bengal, Orissa, Manipur, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu Kashmir, Jharkhand, Bihar, Assam. That means except Kerala, Tamil Nadu and Tripura, all... Hi, comrades, why are you going? Which state is that? Please, which states delegates from which states are going? Please sit there. Please. We didn't tell you to go. Okay. So, except Kerala, Tamil Nadu and Tripura, all the delegates have to go to Sri Rastu, that is cellar, dining hall number 2, for taking lunch. And Kerala, Tamil Nadu and Tripura, that is Subhamastu, hall number 1. Thank you, comrades. तो हेलो, समझ में आ गया ना सबको? हिंदी
हिंदी वालों को भी समझ में आ गया ना कौन कहाँ जाना है। और देखिए, मुझे आशा जी ने पॉइंट आउट किया, जहाँ हमारी पब्लिक मीटिंग है और ये जगह आधा किलोमीटर से कम है, 10 मिनट में वापस हम आ सकते हैं, तो चिंता की बात नहीं है कि वापस कितना चलना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। द पब्लिक मीटिंग स्पेस इज जस्ट अबाउट less than half kilometer from here, so we won't have to walk much to come back here, so there is no tension. 7 o'clock. Yeah, now you end it. The session, inaugural session already end, but one thing you remember, our next session, our delegate session start at 7 p.m. Start at 7 p.m. Don't be delayed. Delegate session, delegates, only delegates. Delegate session start at 7 p.m. इसके बाद है ना मैडम ये लोग यू टॉक इन इंग्लिश मैडम మేడం రామోజీ ఫిలిం సిటీ శ్రీరామ్ సార్ పంపించారు శ్రీరామ్ సార్ మన భోజనం ఈనాడు